Hi everyone, my name is Nikhil and I have been working with Croma Campus from last 4 years as senior data science consultant. For this session, we are going to discuss about R programming language, a language which is solely made for implementing the concepts of data science, machine learning, and mainly in the field of visualization and statistics. So we are going to discuss all the concepts as well as all the aspects related to R programming. And for this session, I will be your tutor. My name is Nikhil and I welcome you to the demonstration video of R programming. Let us start with my introduction first. I have been working in the field of AI, machine learning, data science from last 6 to 7 years. And my association with Croma Campus is around 4 years old. And my previous association was with IBM Career Education. And I have worked in the field of web development. I started my career as a web developer and then I shifted myself to Python, then AI, machine learning, data science, analytics, all. Right. So now I work in all these fields. Okay. So let us start with this. When we talk of R programming language, it's one of those languages which are creating their presence or which are making their presence felt in the world of analytics. Be it analytics, be it data science, be it data analysis, it is just working and it is efficiently giving us the results. जब हम आर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो आर इज अ टूल, इट इज अ बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल, राइट. लैंग्वेज तो है ही, इसको हम एक स्टैटिस्टिकल टूल की तरह यूज करते हैं विच हेल्प्स अस गेट एंड अंडरस्टैंड एंड गेट द रिजल्ट्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, complex statistical problems, and wherever you need to require or wherever you need to apply algorithms of machine learning, डेटा साइंस के कंसेप्ट्स, या फिर आप इसको एआई में यूज करना चाहते हो, वी कैन यूज आर एवरीवेयर, राइट. लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग जो कि हमें हेल्प करता है और जो कि आर को इतना ज़्यादा डोमिनेंट बनाता है. नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स इज लाइक इट इज पोर्टेबल, it is platform independent, high quality graphics, open source and responsive online community. What does this mean? Let us discuss them in detail. Okay. So there are number of other features which I have included here, like open source is there. तो R programming जो है ये open source language है. Open source का मतलब होता है free to download, free to use and free to modify as well. So these three features are present there with R. आप इसको free of cost use कर सकते हो download करके, and then you can also modify if you know how to use the how to program the language, you can do that also, right. Then strong graphical capabilities. Python R प्रोग्रामिंग में आप बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशंस कर सकते हो. ग्राफिकल जो इसके मॉड्यूल्स हैं या पैकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जीजी प्लॉट इज देयर, क्यू प्लॉट इज देयर, राइट. इन सभी को आप बहुत अच्छे से यूज करके बहुत इफेक्टिव जो एक विजुअलाइजेशन है वो क्रिएट कर सकते हो. दैट इज व्हाट इट मींस. हाईली एक्टिव कम्युनिटी, बहुत सारी यूजर्स हैं, तो आप जो है इंटरनेट पे कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो तो इंटरनेट पे आप सॉल्यूशन उसका ढूंढ सकते हो. यू कैन गेट सॉल्यूशन इजीली. अ वाइड सिलेक्शन ऑफ पैकेजेस. नाउ जो आर प्रोग्रामिंग के पैकेजेस हैं, लाइक मॉड्यूल्स हैं, राइट, दे आर अवेलेबल ऑन क्रैन. क्रैन क्या है? लेट मी शो यू. Like if I go to this, comprehensive R archive network, right. In this you will go to and you will search a number of packages. More than 10,000 packages are there present on CRAN, right. So CRAN stands for comprehensive R archive network. For example, you can see here, click on packages and you can see table of available packages sorted by name. Let us go there. See, such a long list of packages are there and you can look for every package present here. You can download it manually and these are number of packages which are present, and this is A, B, C, D, E, F up to Z, right. So every package is available there. So this is what CRAN. And after that we can perform complex statistical calculations
इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द पैकेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आर के लिए यू यूज आर स्टूडियो. तो आर स्टूडियो एक डेडिकेटेड IDE है फॉर आर लैंग्वेज. For example, if I see here, you can see some code written here, and this is the interface of RStudio, right? Here you write the code, here you get the output. This is the environment which shows as जैसे जैसे हम कोड रन करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे शो होगा हमें कि what is happening and what you are getting. और sometimes some suggestions are also there, यहाँ से आप get करते हैं. Then these are some of the other options like files is there if you want to get some files. ये वो फाइल्स हैं जो कि इसकी वर्किंग डायरेक्टरी पे पड़ी हैं, वो भी मैं आपको भी डिस्कस करूंगा व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी. देन प्लॉट्स, व्हाट आर द वेरियस प्लॉट्स. अगर भी प्लॉट आएगा तो यहाँ पे होगा, मतलब जो विजुअलाइजेशन आ गई वो यहाँ शो होगी इन दिस सेक्शन. एंड पैकेजेस, इफ यू वांट टू इंस्टॉल सम पैकेजेस और यू वांट टू इंक्लूड सम पैकेजेस. इंस्टॉलेशन अलग होती है एंड इंक्लूजन अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको ये सभी पैकेजेस शो हो रहे हैं. If I just click on this, that means package is already installed, but you're just loading it. You're just including it into the code, right? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने Amelia पे क्लिक किया, this is library Amelia, it has been loaded, right? Installation कुछ अलग होती है. Installation का क्या काम है? For example, if you click on there, let us say if I want to install any package, like analyzer package I want to install, so I just mention it here and I can click on install, it will be installed. You can see here that we are going to get the output. आपका package install, simple, right? And now if you want to include this package, you can just click here and it will be included in the code, right? So this is how it can be done. After that, I can just tell you that what are the graphical capabilities of R programming. बहुत बहुत अच्छे आप जो ग्राफिक्स हैं वो इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो. जस्ट बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हाउ यूजिंग ओनली फ्यू लाइंस, लेस देन 5 to 6 लाइंस ऑफ कोड यू कैन जनरेट द ग्राफिक्स. ये हम डेटा फेच कर रहे हैं. जस्ट थिंक ऑफ दिस दैट वी आर गोइंग टू फेच दिस डेटा. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं आपसे वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में बात करूंगा. तो व्हाट इज दैट? आर स्टूडियो की वर्किंग डायरेक्टरी होती है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आर स्टूडियो किस डायरेक्टरी से वैल्यूज को फेच कर सकता है, विच डायरेक्टरी इज एक्सेसिबल टू आर स्टूडियो. तो बाय डिफॉल्ट अगर हम आर स्टूडियो की वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो. आई एम गोइंग टू शो यू हियर हाउ वी कैन राइट इन द कंसोल गेट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर की यूजर नेम एंड देन डॉक्यूमेंट्स. तो बाय डिफॉल्ट दिस इज द वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ आर स्टूडियो. जब भी आप इंस्टॉल करोगे ये बाय डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट? आई कैन शो यू एंड ओके. सो दिस train.csv, इसका मतलब ये कि अगर ये वर्किंग डायरेक्टरी है तो मुझे कोई भी फाइल अगर आर स्टूडियो से एक्सेस करवानी है, एक्सटर्नल फाइल, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ इस CSV फाइल में जो कि एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एनालिसिस पर्पस के लिए यूज होती है, डेटा साइंस में यूज होती है, AI में यूज होती है, राइट? तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए ऑब्वियसली. तो डेटा जो है दैट इज प्रेजेंट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ CSV और एक्सेल फाइल्स. तो हमारे पास एक CSV फाइल है जो कि हमारे पास इस लोकेशन पे हमें रखना पड़ेगा. तो लेट अस सी इफ आई एम हैविंग दैट ऑन दैट लोकेशन. आई गो टू दिस पेज, हियर इट इज in document. Here, this is that file. Now you can see how much data is there. इसमें काफी डेटा पड़ा है और ये डेटा किस चीज का डेटा है? दिस डेटा इज रिगार्डिंग जो if you know that Titanic was Titanic, right? That was a big ship, right? Which got submerged in the water. तो उसी का डेटा है, right? And if we just see at in the R studio, we are fetching this data read.csv. So अब इस लाइन को एग्जीक्यूट कैसे करूँगा? Either you select it like this, या तो इस तरह से select करो and click on run. See, data fetch हो. Or what you can do is
या तो इस तरह से रन करो और जस्ट क्लिक एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड हिट कंट्रोल एंटर, अगेन एग्जीक्यूट, राइट. सो दिस इज द टू वेज. Then I'm going to see what do we have in this data. So let us execute it. डेटा हमारे पास हमें मिल गया कि दिस इज व्हाट द डेटा इज प्रेजेंट इन द फाइल. सारा डेटा नहीं आया, ऊपर के कुछ रोज आए हैं और नीचे के कुछ. आफ्टर दैट वी आर यूजिंग दिस फंक्शन एंड yeah, okay, let us leave this. I'm not going to discuss all this. So here library Amelia is being used. तो Amelia एक library है जो कि हम use करेंगे for graphical purposes. Let us include it. After that mismap is the function. It is see. मैंने कहा था plots में plotting होगी. Just with 3 lines of code आपने डेटा को रीड किया, उसके बाद आपने लाइब्रेरी Amelia को इंक्लूड किया एंड mismap फंक्शन से यू आर गेटिंग दिस missing values versus observed. So whatever the values were there in the file वो यहाँ पे शो हो रही है. Got it? और ये आपको कैलकुलेशंस भी करके दे रहा है कि मिसिंग 8% और ऑब्जर्व 92%. राइट. So this is the graphical capability of our program. Now let me show you something more. अब जैसे यहाँ देखो, जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, मशीन लर्निंग में हमारे पास there are some algorithms like linear regression is there, logistic regression is there, SVM is there, random forest is there, decision tree is there, number of algorithms are there. यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि how we can apply linear regression with the help of just 4-5 lines of. ठीक है, तो R programming so powerful. For example, अब यहाँ पे आप देखो, हम एक रीड एक्सेल पैकेज है उसको यूज कर रहे हैं, मतलब लोड कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. आई एम गोइंग टू यूज इट, मैंने इंक्लूड कर लिया. आफ्टर दैट अगेन ये एक्सेल फाइल है जो कि सेम उसी लोकेशन पे पड़ी होगी. ये देखो एजेंट हाइट डॉट एक्सेल, इसमें भी कुछ डेटा है, ये बहुत छोटा सा डेटा है. नाउ आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट इट, रीड डेटा. आफ्टर दैट दिस इज lm height इक्वल्स टू, दिस इज लीनियर रिग्रेशन. बस एक लाइन से लीनियर रिग्रेशन अप्लाई होगा. राइट. नाउ लेट अस सी द रिजल्ट्स. दैट्स इट. तो यहाँ पे हमारे पास ये आप रिजल्ट्स देख रहे हो. देयर आर की रेजिडुअल्स मिनिमम इज देयर, फर्स्ट क्वार्टाइल इज देयर, मीडियन इज देयर, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम एंड ऑल. तो वी हैव गॉट ऑल दीज रिजल्ट्स. ये तो जब चलो अब जब आप एल्गोरिथम स्टडी करोगे तब आपको पता चल जाएगा व्हाट आर दीज रिजल्ट्स. तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस with the help of R so easily, right? So this is what I was trying to show you. Now next is can perform this and interfacing with databases. Yes, R programming is very good at interfacing with approximately all databases. Then data variety, it can handle structured as well as unstructured data. तो चाहे आपको unstructured data को structure में convert करना हो, whatever it is, you can do it with the help of R programming. कि आपने उसमें से null values रिमूव करनी है, आपने उसमें से empty columns हटाने हैं, you want to fill the missing values also, वो आप कर सकते हैं बहुत easily, right? number of functions are there जो कि आप data preparation में use करते हो, तो वो हम R programming से बहुत easily कर सकते हैं. then cross platform support, which is means R is machine independent. तो जितनी भी languages अब आ रही हैं, they are all मशीन इंडिपेंडेंट. दैट मीन्स अगर आप इस सिस्टम पे कोई प्रोग्राम लिखते हो तो दूसरे सिस्टम में सिर्फ यू नीड R, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इजी रिपोर्ट जनरेशन. यस, वी कैन वेरी इजीली जनरेट द रिपोर्ट्स. नाउ नेक्स्ट इज वेयर वी कैन सी द एप्लीकेशंस ऑफ R प्रोग्रामिंग. अब ठीक है, दीज आर द वेरियस फीचर्स जो कि R प्रोग्रामिंग के हैं. अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रही है? यस, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ R प्रोग्रामिंग आर देयर. finance, banking, healthcare, social media, e-commerce, manufacturing. Now see, all the programming, all the domains are different. Like finance अलग है, banking एक अलग domain है, healthcare is different, social media is different, then e-commerce is different, manufacturing is also different. So number of domains are there, right? तो R programming कहीं use हो रही है to
डू सेंटिमेंट एनालिसिस, जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूजर, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है कि कस्टमर का या आप अपनी यूजर का देख रहे हो व्हाट इज द सेंटिमेंट, ठीक है, कि वो क्या सोच रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के को लेकर, क्या सोचता है, राइट। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं इसे, वो अपने एम्प्लॉयज का सेंटिमेंट एनालिसिस कर रही हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू रिटेन द एम्प्लॉयज इन द कमिंग ईयर और नॉट। इस तरह की एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। नाउ लेट अस सी, जैसे हम रियल लाइफ यूज केसेस देखते हैं आर लैंग्वेज के, तो फेसबुक इज यूजिंग इट, कोड इज यूजिंग इट, गूगल, फोरस्क्वेयर, माइक्रोसॉफ्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, थॉमस कुक, ट्विटर, दे आर यूजिंग इट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस। तो कहीं सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हो रहा है, कहीं कहीं चर्न एनालिसिस के लिए यूज हो रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। तो दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस as well as the applications of R. So R बहुत सारी domains में use हो रहा है, and if we see this, so we can say that yes, R is getting more and more into the market, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज कर रही हैं। सो दिस मेक्स अस अ गुड करियर, यू कैन से प्रोफाइल। अगर आपको R अच्छे से आती, यू कैन गेट सेटल्ड इन योर करियर very easily and with good package, right? So now let us see, if you get enrolled with us, what is the content which you will be getting, right? क्या आप पढ़ोगे? So I will be do that. Okay, so for example, okay, so yes, see, this is the course curriculum which we will be working on if you get enrolled with us. So we see this core curriculum is designed for the students or फिर the candidates जिनको पहले से प्रोग्रामिंग आती है, या पहले से आर का आइडिया है, या पाइथन आती है, या फिर वो कैंडिडेट्स भी जिनको पहले से ना तो प्रोग्रामिंग आती है ना ही आर का आइडिया है, नथिंग। तो दोनों के लिए सूटेबल है, राइट? हाउ कैन आई से दिस? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल। हम बिल्कुल हिस्ट्री ऑफ आर, I will not be going into what the history and all, but yes, we will be starting from the scratch. आप scratch से पढ़ना शुरू करोगे। Your main aim should be how to solve the problem. ठीक है? Yes, this is correct that you can go with and understand the R, और उसको implement करके you can do the complex calculations, statistical and mathematical functions you can use. आप अच्छे से वहाँ पे अपने सेटल भी हो सकते हो। लेकिन इफ यू सी देयर इज हिस्ट्री ऑफ आर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू वर्क ऑन आर स्टूडियो, ये हम स्टार्ट करेंगे। देन आर प्रोग्रामिंग बेसिक्स, हाउ टू यूज द आर कंसोल एंड ऑल। देन वी विल सी व्हाट आर द वेरिएबल्स, like we do have number of data types in R programming, that is array is there, list is there, matrix is there, then data frames are there, vectors are there. These are all which we will see in detail. Then how to do different operation on all these data structures. After that we will see how we can work on the data frames, because data frame एक ऐसा data structure है जो कि data analysis में बहुत extensively use होता है। So if you know how to manipulate and work on the data frame, तो आप easily उन चीज़ों को follow कर सकते हो। So that is what we have put up in detail. How you can work with dates in R, then exploratory data analysis. Yes. Now what is this? Exploratory data analysis क्या होता है? देखो, जब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मशीन लर्निंग है, उसके बाद एआई है, उससे पहले आता है डेटा साइंस। और डेटा साइंस में जब आप अपनी मशीन को लर्न करवा रहे हो एक डेटा पे, यू आर यूजिंग डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, राइट? तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? आपको पहले डेटा को एनालाइज करना पड़ता है कि वेदर योर डेटा इज करेक्ट एनफ और वेदर योर डेटा इज प्रिपेयर्ड एनफ, ताकि आप अपनी मशीन को सिखा सको। ऐसा तो नहीं है आपके डेटा में कुछ मिस्टेक्स हैं जिससे आपका मशीन भी गलत ही सीख जाए, राइट? तो दिस इज what exploratory data analysis is all about, in which you will be working on number of operations, and according to the problem you will be analyzing the data. So this is what it means, right?
फॉर एग्जाम्पल लाइक कैटेगोरिकल डेटा होता है जिस जो डेटा इस फॉर्म में होता है कि येस नो, मेल फीमेल, राइट, जिसमें कैटेगरीज बनी हो डेटा की, राइट, like boy, girl, like this. Fine. So we will see what are the various functions we can perform with that. After that, working with text data when you are going to work with regular expressions. So after that, yes, loops are there, which are the basics of every programming language. Then how you can use graphics, ggplot, qplot, how you can apply whisker plot. Whiskers plot क्या होता है, उसका क्या advantage है, why it is being extensively used in analysis, वो हम discuss करेंगे. Then yes, advanced R graphics, differential statistics, and then comes linear regression models. So all of these topics will be studied in detail, like you are already seeing there, right? So this is the whole course content on which we will be working if you get enrolled with us. Now, with this, I want to tell you that as soon as one topic in the course content gets completed, you get the exercises. For example, if I may see, these are the list of exercises which we have और जो हम students को देते हैं so that they can work on. For example, if I may show you, you can see we have exercises, basic exercise, the basic exercise for R. These are all basic exercises which you will be doing. Then after this, if I go with arrays and data frame, this is the exercise, right? In this, what are the various operations and what are the various tasks you can do with the data frames and arrays? This is what you can do, right? तो ऐसे से अलग अलग हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं which you will be working on. After this, when the course gets completed, you will be working on project, या फिर you can just think of like this कि you will be working on the project during the course. For example, as we know कि R जो है वो analysis के लिए use होता है. So either you will be given some data जिसमें आप analysis करके दिखाओगे, right? That will be, sometimes it will be categorical data, sometimes it will be some discrete data, इसमें simple values हैं, right? तो उसके corresponding you will be working on exploratory data analysis और machine learning का algorithm मुझे apply करके दिखाओ, linear regression apply करके दिखाओ या logistic regression apply करके दिखाओ. This is what we will do. And one more thing, at the end of the project, I will be helping you to get your resume prepared, right? उसमें आप क्या करोगे, what I will be helping you in, कि मैं आपको बताऊंगा कि what key points you have to include into your resume so that it can directly or it can hit the requirement. जो job profile के लिए आप चाह रहे हो उसको वो directly hit करे, right? So whatever we will be learning through, we will be including that. For example, you know how to implement the concepts of machine learning, you know how to apply EDA, so you know how to prepare the data and all. So this is what we will be including. So these are some of the key points which you will be you can say getting from us. I'll be providing you assistance in that so that you can create a resume which cannot be ignored, right? So this is all what we will be going through in our programming if you get joined with our Croma Campus. So that's it. Happy learning.